गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन एट 8 बिलियन। तो सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 15 नवंबर को हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन पहुंच चुकी है। तो धीरे धीरे जो है ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है उन्होंने कुछ इस पे आंकड़े दिए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ग्लोबल पॉपुलेशन पिछले 12 साल में 7 बिलियन से 8 बिलियन पहुंची है, लेकिन अगली जो 1 बिलियन कवर करने में हमें 15 साल लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है ग्लोबल पॉपुलेशन का वो स्लो हो रहा है। मॉर्टैलिटी रेट कम होने की वजह से जो है 2.1% पर ईयर के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी 1962 से 1965 के बीच में। 1950 से लेकर अगर हम 1987 का आंकड़ा देखें तो पॉपुलेशन डबल हुई 2.5 बिलियन से 5 बिलियन। उसके बाद धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ में आंकड़ा कम होने लगा। अगर हम 2022 की बात करें तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया में रहती है और इंडिया की पॉपुलेशन 1.412 बिलियन जो पहुंच चुकी है इस साल। और 2023 में ऑफ कोर्स इंडिया ओवरटेक कर लेगा चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। यूएनएफपीए कह रहा है कि 2080s में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10.4 बिलियन पीक कर जाएगी और उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन और हम सॉरी 2048 में इंडिया की पॉपुलेशन पीक करेगी 1.7 बिलियन पर और उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 1.1 बिलियन होगी। अब यूएन के मुताबिक इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन बनती जा रही है बहुत सी कंट्रीज़ में। और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एटसेट्रा, यहाँ से एमिग्रेशन हो रहा है, मतलब बाहर जा रही है पॉपुलेशन। ठीक है। सो इंडिया की पॉपुलेशन जो है ग्रोथ वो स्टेबलाइज हो रही है, 0.7% हो चुकी है पर ईयर। इंडिया ने अपना जो है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट अचीव कर चुका है, मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। तो एक तरह से लगभग फर्टिलिटी रेट इक्वल हो चुका है, रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी की। बिलियनियर्स के पास इतनी वेल्थ है जितनी पुअरेस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड के पास है। टॉप 1% जो लोग हैं 1/5 ऑफ द वर्ल्ड इनकम को जो है पॉकेट करके बैठे हैं। रिचेस्ट कंट्रीज के जो लोग हैं वो पुअर कंट्रीज के मुकाबले 30 साल ज़्यादा जी पा रहे हैं। तो इन सबको हमको जो है इनइक्वालिटी को जो है हमको डील करना ज़रूरी हो चुका है। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड क्या है? तो 1969 में इसको बनाया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना, नेशनल स्ट्रेटजीज और प्रोटोकॉल बनाने में हेल्प करना, बर्थ कंट्रोल को जो है प्रमोट करना, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करना, ये सब जो है काम यूएनएफपीए के हैं। ठीक है। तो ये आपके यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर आता है और इसको कोई यूएन से बजट नहीं मिलता है, बस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से ये काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, उनको जो है डायरेक्टली ये टैकल कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। अगेन हमारे लिए टॉपिक ये दोबारा न्यूज़ में आया है तो हम इसको देखते हैं कि ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए ही है। और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो है सजेशन को रिजेक्ट करते हुए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया है और 15 एकर्स ऑफ लैंड सारे सब डिस्ट्रिक्ट्स में लेकर वहाँ पर जो है ये जहाँ पर ऑफकोर्स शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है कंसिडरेबल इस क्राइटेरिया को मीट करने वाली, वहाँ पर ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है वो खोले जाने वाले हैं। तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कहा था कि ये 15 एकड़ आप कॉन्टिन्यूस लैंड जो है क्राइटेरिया कैलकुलेट कैसे करोगे? फॉरेस्टेड लैंड्स हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पर आप 15 एकड़ प्लॉट कैसे लेकर आओगे कि आप वहाँ पर ही स्कूल बनाओगे? लेकिन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि ये क्राइटेरिया जो है यूनियन कैबिनेट ने फाइनलाइज कर चुके हैं और हम जो है इसको आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। और अभी जब जनजातीय गौरव दिवस था तब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने एकलव्य स्कूल जो है झारखंड में साथ जो है वो उनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अभी हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले ही कि 1997 और 98 में इसको शुरुआत हुई। क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स देने का इसका मोटिव है और हाई और प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज जो हैं वो भी जो है बच्चों को देने का इसका मोटिव रहता है। आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ग्रांट्स दी जाती हैं उसी के अंदर ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। जहाँ पर डेंसिटी ऑफ एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है जिन सब डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि स्कूल एजुकेशन दी जा सके विदाउट इवन रेजिडेंशियल फैसिलिटी। ठीक है। सो लेटेस्ट चेंजेस क्या हैं
कि क्राइटेरिया को चेंज किया गया है कि बाय ईयर 2022 हम हर ब्लॉक में जहाँ पर 50% एसटी पॉपुलेशन है और जो है 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल पीपल रहते हैं, वहाँ पर हम एक ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एटलीस्ट बना कर देंगे। और ये ऑन पार विद नवोदय विद्यालय होंगे और स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएगी लोकल आर्ट एंड कल्चर को जो है प्रमोट करने के लिए भी। लगभग अगर हम 2011 का आंकड़ा देखें, सेंसस का आंकड़ा देखें, तो 564 सच सब डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर ये स्कूल बनाए जाएंगे और 102 सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं। तो मतलब 462 के आसपास हमें स्कूल्स न्यू बनाने पड़ेंगे बाय द ईयर 2022। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कमर्शियल फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स एंड पॉलिसी एक्शन प्रॉस्पेक्ट्स। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लगभग $55 बिलियन पर ईयर इंडिया को चाहिए होंगे, मतलब लगभग $840 बिलियन अगले 15 साल तक चाहिए होंगे अगर हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है बाय 2036 600 मिलियन पीपल या फिर 40% ऑफ जो पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फंड लगभग 75% ऑफ सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करते हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो 15% जो है फंडिंग प्रोवाइड करती है। बाकी का जो 5% बचता है वो प्राइवेट सोर्सेज से आता है। वीक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, वीक रेवेन्यू कलेक्शन है, उसकी वजह से जो है प्राइवेट फाइनेंसिंग बढ़ नहीं पा रही है। अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सिर्फ 0.15% ऑफ जीडीपी जो है वो होता है, जबकि पुअरेस्ट कंट्रीज में भी अगर हम देखें तो वहाँ भी 0.3 से 0.6% ऑफ जीडीपी पहुँच चुका है प्रॉपर्टी टैक्स। तो एक तरह से ये पॉलिसी डिसीजन कि हम प्रॉपर्टी टैक्स को कम रखेंगे, उससे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस ऑफ कोर्स। जो है पीपीपी ट्रांजैक्शंस भी जो है, पीपीपी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला है। स्टेट्स और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फ्लैगशिप मिशंस हैं जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको भी जो है वो इम्प्लीमेंट बहुत स्लो करती है क्योंकि उनके पास इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट में सजेशंस दिए गए हैं कि आपको फाइनेंसिंग करनी है ग्रीन, स्मार्ट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है यूएलबीज को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को, ताकि वो प्राइवेट सोर्सेज से बोरो कर सकें। जैसा कि हमने कल एक एडिटोरियल शेयर किया था म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है, तो उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मार्केट फ्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है उनको टैक्सेशन पॉलिसी और फिस्कल ट्रांसफर सिस्टम में, जिससे कि सिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट फाइनेंसिंग को लीवरेज कर सकें। कैपेसिटी ऑफ सिटी अथॉरिटीज़ को भी जो हमको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं एटलीस्ट उसको वो अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टेमिस 1 मिशन, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने, आपको पता होगा कि कल आर्टेमिस 1 मिशन को जो है वो लॉन्च किया है जिससे कि ह्यूमंस जो है वो मून पर जा सकेंगे। तो ये सिर्फ एक लूनर ऑर्बिटर मिशन है अभी तो, लेकिन टाइम आने पर इसको एक तरह से टेस्ट ये किया जा रहा है कि कैसे हम इसको मून पर ले जाकर और वापस अर्थ पे कैसे वापस लेके आ सकते हैं। तो इसमें क्यूब सैट्स लगाई गई हैं, छोटी सैटेलाइट्स लगाई गई हैं ताकि जो है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस कर सकें। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए जाएंगे इसके द्वारा ताकि डीप स्पेस एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट जो है ह्यूमंस के ऊपर क्या होता है वो भी देखा जा सके। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का यूज़ किया जा रहा है जो कहा जा रहा है कि वो इस टाइम का सबसे पावरफुल एवर बिल्ट रॉकेट है। ठीक है, तो नासा क्यों जा रहा है मून पर? तो ऑफ कोर्स 13 पोटेंशियल लैंडिंग लोकेशंस देखी गई हैं। लूनर जियोलॉजी को स्टडी करना, लूनर आइस को सैंपल करना, ये सब इसका मिशन होगा। मार्स जो कि 200 गुना दूर है अर्थ से एज कम्पेयर टू मून, तो इसीलिए मून के ऊपर जाकर वहाँ पर रहना और डीप स्पेस में काम करना, उससे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि कल को अगर हमें उनको मार्स जाना पड़ेगा तो वो कैसे जाएंगे। ठीक है, तो एक परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस भी जो है नासा बनाना चाहता है मून पर और इवन वहाँ पर से कमर्शियल आइटम्स भी डिराइव करना चाहता है। लगभग $1 बिलियन तक का फ़ायदा होगा जिससे यूएस इकोनॉमी को। तो आपको पता है कि ऐसे मिशन से जो हैं और भी जो यूथ है वो भी अट्रैक्ट होगा साइंटिस्ट बनने के लिए, फ्यूचर इंजीनियर बनने के लिए। ये भी नासा का एक मिशन ही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शब्दशाला। ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है वो शब्दशाला को जो है वो लॉन्च करने वाली है, जिससे क्या होगा कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं उनकी ट्रांसलेशन करने के लिए सजेशंस मंगवाए जाएंगे। तो पीपल अक्रॉस इंडिया जो है वो इस शब्दशाला वेबसाइट पर जा सकेंगे, अपने सजेशंस दे पाएंगे और बताएंगे कि क्या जो ये न्यू शब्द आ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इनका असल में हिंदी में क्या ट्रांसलेशन हो सकती है। तो जो है
एजुकेशन मिनिस्ट्री एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम हुआ टेक्निकल वर्ड सिलेक्शन कमेटी। ये देखेगी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन कौन सी है और उस वर्ड की वो ट्रांसलेशन हिंदी में देगी, ठीक है। तो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या है, अक्टूबर 1 1961 में इसको बनाया गया विद अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये काम करती है। तो एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी लेके आना इसका ऑब्जेक्टिव है। स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, रीजनल टेक्स्ट बुक्स बोर्ड्स और स्टेट ग्रंथ अकेडमीज़ के साथ ही मिलकर काम करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है युद्ध अभ्यास। डिफेंस के लिए या सिक्योरिटी आप कह सकते हो, उसके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 18th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है वो कल से शुरू हो चुकी है। और ये हाई ऑल्टीट्यूड और क्लाइमेट वॉरफेयर, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट वॉरफेयर के ऊपर इसका फोकस रहेगा। हर साल ये इंडिया और यूएस के बीच में की जाती है। इसमें अपार्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, पीस कीपिंग और पीस इन्फोर्समेंट के भी जो है वो ऑपरेशंस किए जाते हैं। और अगर हम देखें कि 2021 में लास्ट ईयर तो ये अलास्का में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 1000 लैंग्वेज इनिशिएटिव। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गूगल का 1000 लैंग्वेज इनिशिएटिव शुरू हो चुका है, जिसमें कि एआई जो है वो लगभग 1000 लैंग्वेज जो है वो सीखेगी, जिससे कि जो कि ऑफकोर्स लगभग 1000 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड होंगी। इससे जो है यूज़र्स को जो है अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकेगा, वो अपने ही लैंग्वेज में जो है सर्च कर सकेंगे, गूगल की सर्विसेज जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। फिर एक तरह से वो 1000 लैंग्वेजेस का एक बहुत बड़ा मॉडल बनाना चाहते हैं गूगल। और जो है ये अभी अंडर डेवलपमेंट है ऑफ कोर्स। और गूगल जो है वो कोई एक स्पेसिफिक यूज़ केस तो नहीं दे रहा है कि वो इसका क्या यूज़ करने वाले हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि गूगल अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको जो है अकोमोडेट कर देगा, ताकि एआई के थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज में गूगल से आप इंटरेक्ट कर सको। तो अपार्ट फ्रॉम गूगल, ओपन एआई या फिर फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, वो भी इसके ऊपर काम कर रही है कि एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन कैसे जो है वो बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि वॉस्ट्रो अकाउंट्स जो है वो 9 और रशियन बैंक्स के साथ जो है वो आप खोल सकते हो। तो रशिया जो है पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसके साथ हम रुपी के बेस में जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है और फिर हम देखेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट आप ये सिचुएशन देख सकते हो कि समझ लो कि एसबीआई जो है उनका लिथुआनिया में कोई अकाउंट नहीं, लिथुआनिया में उनके कोई ब्रांच नहीं है। तो वहाँ पे एसबीआई के कस्टमर्स या फिर कोई इंडियन है जिसका एसबीआई में अकाउंट है, वो कैसे एसबीआई के साथ जो डील करेगा। तो क्या होता है कि एसबीआई क्या करेगा, लिथुआनिया का समझ लो कि स्टेट बैंक ऑफ लिथुआनिया है। आई एम नॉट श्योर कि वो असल में है या नहीं, बट मैं आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि कोई स्टेट बैंक ऑफ लिथुआनिया है, वहाँ पर एसबीआई अपना अकाउंट खुलवा लेगा। और उस मतलब बैंक में हमारे स्टेट बैंक ऑफ लिथुआनिया जो है फॉरेन बैंक में इंडिया के एसबीआई का एक अकाउंट होगा जिसको आप नॉस्ट्रो अकाउंट कहोगे। उसमें कस्टमर पैसा डिपॉजिट करा सकता है या उससे पैसा विड्रॉ कर सकता है, और वो सारी ट्रांजैक्शन जो है वो एसबीआई के बेसिस पर होगी, ठीक है। तो आप एसबीआई का आपके पास अकाउंट है और आप लेकिन जो है वो उसके नॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू जो है वो डील कर रहे हो, तो आपको जो स्टेट बैंक ऑफ लिथुआनिया है वो सारी वो सर्विसेज देगा जो आपको एसबीआई दे सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको लोकल करेंसी जो लिथुआनिया की करेंसी है उसमें आप डील कर पाओगे विदाउट इवन रिजॉर्टिंग टू जो है आपकी कोई आपको स्पेशल बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ रहा। सिमिलरली वॉस्ट्रो अकाउंट भी ऐसा ही होता है। वॉस्ट्रो अकाउंट जो है बस एक नॉस्ट्रो अकाउंट का ही दूसरा नाम है। तो इसमें क्या होता है कि यही चीज़ है कि रशिया में एसबीआई ने एक बैंक में अकाउंट खोल लिया है और वहाँ पर एक कस्टमर जो है उसको ताकि रुपी में पेमेंट ना करनी पड़े, तो वो रूबल लेके जाके उस रशियन बैंक में पैसा जमा कराता है और उस रशियन बैंक जो है वो कहता है कि हाँ हमारे पास पैसा आ गया, और उस रशियन बैंक का भी हमारे एसबीआई में अकाउंट होता है। तो जब ये आपस में दोनों बैंक एक दूसरे के अकाउंट खोल लेते हैं तो वो कस्टमर्स की जो भी डीलिंग्स है उसको सेटल कर पाते हैं अपनी लोकल करेंसीज में। तो इससे क्या होता है, आपको डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है ना। तो ये इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल प्रेस डे। तो ये आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 16 नवंबर को जो है नेशनल प्रेस डे कमेमोरेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने फंक्शन करना स्टार्ट किया था। 1966 में इसको सेटअप किया गया फर्स्ट प्रेस कमीशन के सजेशंस के बाद। प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 में इसको पास किया गया और इसको एक स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया। इसका मोटिव यह है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस को सिक्योर रखे, प्रिजर्व करके रखे। काइंड ऑफ ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी भी है, क्योंकि ये कंप्लेंट्स अगर कोई
कोई प्रेस के अगेंस्ट जाए फॉर वायोलेशन ऑफ एथिक्स या फिर फॉर वायोलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसके अगेंस्ट वो एक्शन भी ले सकता है. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is world population at 8 billion. So this topic is important for your social issues. You know that recently the world population has reached 8 billion mark on 15th of November 2022. This is an unprecedented growth because human lifespan is increasing because of public health improvement, nutritional improvements, personal hygiene and medicine. But UNFPA is saying that global population took almost 12 years to grow from 7 billion to 8 billion, and it would take at least 15 years for the next billion to be added in the global population, which means that the overall growth rate of global population is slowing down. And if we look at the past trends, then the falling mortality rate between 1962 and 1965 led to a peaking of population growth between these 3 years at 2.1% per year, and between 1950 and 1987 the world population doubled from 2.5 billion to 5 billion. Since then the population growth has slowed down. Currently half of the world's population lives in Asia, and India is estimated to overtake China next year in 2023 to be the most populous country in the world. And UNFP has also projected that the world population would peak at 10.4 billion in the 2080s, and Indian population will peak in 2048. And by the end of this decade, India will have 1.1 billion population. International migration is also acting as a driver of growth in many countries. The South Asian nations, they are having high levels of emigration, not immigration, but emigration, and this has led to transfer of population to other countries. So India's population growth is stabilizing and it is growing at almost 0.7% per year. India has already reached the replacement level fertility rate, which means that the same amount of people are getting born as it is required to replace the dying population. Okay, so but the concern here is that there is growing inequality. Income inequality is a concern for us. A handful of billionaires, they are controlling as much wealth as the poorest half of the world. The top 1% of the globe is controlling 1/5 of the world's income, and the people in the richest countries, they have a life expectancy which is 30 years more than those people who are living in the poorest countries. So what is UNFPA, or the United Nations Population Fund? So it was created in 1969, and it aims to improve reproductive health. It helps in creation of national strategies and protocols, and also promote birth control by providing supplies and services. It also launches campaign against child marriage, obstetric, fistula, and even female genital mutilation. So it has its mandate, which is established by the UN Economic and Social Council. It is not supported by any UN budget, but it is supported by voluntary contributions. The aim of this UNFPA is to directly tackle the SDGs on health, education, and gender equality. So the next topic is Eklavya model residential schools. This topic is also important for your social issues. We are again discussing this topic because a significant development has taken place, whereby Tribal Affairs Ministry has discarded the suggestion of Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment that the criteria of 15 acres of land on which these Eklavya model residential schools would be established in all sub-districts is arbitrary. The committees had said that there are difficulties in identifying and acquiring such lands in several districts, especially in those districts which are in forested and hilly areas. But the Tribal Affairs Ministry has said that this criteria has already been decided now, and it has been finalized by the Union Cabinet. That's why they are implementing it. If you look at the recent developments, on 15th of November, President Draupadi Murmuji had laid the foundation stones of 7 such Eklavya schools in Jharkhand on Janjatiya Gaurav Divas.
So, what are these Eclave Model Residential Schools? So, you know that it started working in 1997-98, and the aim is to impart quality education to children belonging to scheduled tribes. It also aims to enable students to avail opportunities in high and professional educational courses. So, remember that it has a capacity of about 480 students, and the classes are between class 6 to class 12. And these schools are set up under the Article 2275 Clause 1 of the Constitution, in which the grants are provided. Of course, Ministry of Tribal Affairs is implementing this mission. Wherever there is ST population which is higher in these sub-districts, then Enclave Model Day boarding schools are also being proposed, which will be basically an experimental basis, and the ST students would be able to avail school education without even the residential facility. Certain new changes have also been introduced by the ministry, like by the EA 2022, we want to have every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal population to have these Enclave schools. And these schools would be working on par with Navodaya Vidyalayas. They will also have special facilities for preserving local art and culture. If we look at this census 2011 data, then at least 564 such schools have to be constructed, out of which 102 schools exist already, which means 462 new schools have to be opened by the year 2022. So the next topic is urban infrastructure need. This topic is important for our economy section. So a new World Bank report has highlighted that India would need almost $840 billion in the next 15 years to address the need of its rapidly rising urban population. So this report name is Financing India's Infrastructure Needs, Commercial Financing Constraints and Policy Action Prospects. And it says that by 2036, there would be 600 million people, or 40% of India's population, who would be living in urban areas, whereas the central and state government funds more than 75% of cities' infrastructure. The ULBs, or the urban local bodies, are funding 15% out of their surplus revenues, and the rest of the 5% is taken care by the private sources. A weak regulatory environment and weak revenue collection is forcing the private financing to or it is a weak and regulatory environment and weak revenue collection is adding to the challenge of private financing. And because of political reasons, of course, urban property tax has stood at a very low level, that is at 0.15% of GDP. Whereas even if we look at the low and middle income countries, this amount stands at about 0.3 to 0.6% of GDP. So we have to reform our policy decisions so that low revenue problems can be taken care of. Even the PPP projects have seen a significant fall. The states and urban local bodies, they are even failing to implement the flagship missions of the central government because of constraints on implementation capacity. That's why suggestions have been given that large amounts of financing needs is required to promote green, smart, inclusive and sustainable urbanization in India. And these ULBs have to provide a conducive environment so that they can borrow from private sources, like we yesterday discussed about municipal bonds in one of our editorials. So government of India has a role in removing market frictions. They have to undertake structural reforms, including those in taxation and fiscal transfer system, so that the capacity of city authorities can be expanded by increasing the revenue stream to them. So the next topic is Artemis 1 mission. This topic is important for your science and tech section. So NASA has recently launched the Artemis 1 mission, which will take humans back to the moon. It is just a lunar orbiter mission currently, but it will have a target of returning to the Earth, and it will lay the foundation of more complex and ambitious missions. It is carrying certain CubeSats, which will be equipped with instruments so as to perform specific investigations and experiments, including, of course, searching for water in all forms on the moon. And certain biological experiments will also be carried out so that we can see the impact of deep space atmosphere on human life. The world's most powerful rocket system, Space Launch System, will be used for this mission, has been used for this mission rather. So why NASA is going back to the moon? Because NASA wants to study the
lunar geology and also sample lunar ice. The main mission here is, if we look at it, that Mars is at least 200 times farther away from the Earth than the Moon, and astronauts, if they live and work at the Moon, they will have they would simulate a similar uh, experiment on the Moon as if they are living on the Mars. So it will provide a experimental ground for these astronauts for the ultimate target of getting at the Mars planet. Okay, so Artemis will also provide commercial items to the US economy to the tune of $1 billion. And apart from that, it will also inspire new engineers and scientists to join the NASA or the scientific stream. So the next topic is Shabd Shala. So this topic is important for your social issues and governance also. So Commission for Scientific and Technical Terminology will be launching the Shabd Shala mission soon, and it will invite suggestions for translation of words which have been recently added to the English language. So people across India can log on to this website and they will be able to provide suggestions with respect to the translations of these new words. And the Education Ministry will appoint a committee, the Technical Word Selection Committee, which will look at the most popular or appropriate translations for each word, and they will bring out a glossary after that. So what is Commission for Scientific and Technical Terminology? It was established in 1961 through a presidential order, and it functions under the Department of Higher Education, which is under the Ministry of Education, of course. And its objective is to evolve a standard terminology and propagate its use and distribute it widely. It also collaborates with the state governments, universities, regional textbook boards, and even the state academies. So the next topic is Yudh Abhyas. This topic is important for your security section. So 18th edition of India-US Joint Military Training Exercise has begun in Oli, that is in Uttarakhand, and the aim is to focus on high altitude and extremely cold climate warfare. It is conducted annually between India and US. The last time it was conducted was in Alaska in October 2021. And the operations include humanitarian assistance and disaster relief, apart from, of course, the peacekeeping and peace enforcement missions. So the next topic is 1000 language initiative. This topic is important for your social issues. So Google is working upon a model or an initiative in which they will be developing the AI to learn and to be able to speak 1000 most spoken languages of the world. So it will be the largest language coverage amongst existing speech models. And they have not yet disclosed as to what they are going to use it for specifically, but it is being believed largely that they will accommodate this AI model in all of the Google's products. And it is not just Google which is working upon this AI based language models, but also other firms like OpenAI and even Facebook's parent company Meta. They're also working on such AI based language translations. So the next topic is Vostro accounts. This topic is important for our economy section. So Union government has also recently approved 9 more Russian banks to with the Vostro accounts. So Russia has become, the first country to facilitate rupee-based export-import transactions. It will, of course, facilitate India's exports to sanction-hit Russia. And let us see what is the difference between Nostro account and a Vostro account. Before understanding the Vostro account, you have to understand what is a Nostro account. So it is basically an account which is held by a bank in another bank. Like I was giving an example of State Bank of India. It has an account in, let's suppose, State Bank of Lithuania. Because it does not have the SBI does not have a branch in State Bank of in Lithuania. So instead of opening their own branches, they would hold an account in this State Bank of Lithuania, and it would allow the customers to deposit the money in the bank's account in another bank. And these foreign banks holding an account in foreign banks would allow SBI to retain its customers even in Lithuania. Similarly, a Vostro account is just another name of a Nostro account in which the account is held by a bank in another bank, and it allows the customers to deposit the local money on behalf of another bank. So basically, a Nostro account is a Vostro account for the bank, and it allows the transactions to happen in 2 currencies, thereby bypassing the sanction in case of Russia.
So the next topic is National Press Day. This topic is important for our governance section. You know that on 16th of November we celebrate this National Press Day because Press Council of India started functioning on this very day. And Press Council of India was first set up in the year 1966 because the first Press Commission made recommendations to the Parliament that there should be such a commission. It was given a statutory status in 1978 when this Press Council Act was passed. And the objective of Press Council of India is to preserve the freedom of press in the country. And it is also a quasi-judicial authority because it adjudicates the complaints against and by the press for violation of ethics and for violation of freedom of press, respectively. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.